Okay, yes, students, once again welcome in chemistry class. So today I will take up the topic acid. So previous two lectures we have certain terminology has been defined in a different way. Now today we exclusively take care of the acids and the first term, that is the acid. So acid is what? First we must define. So first of all you must know acid acts as acid when it is dissolved in water. So normally you know that acids are in gases. Normally acid present in this universe as a gas only. So when this gaseous acid dissolves into the water, then only it will act as a acid. Because when it dissolves into water, it produces hydrogen ion. Hydrogen ion, H plus ion, and this H plus ion is responsible for the activity as an acid. So that is why acid will act as acid when it is dissolved in water. When it is in vapor form, it will not act as acid. So until unless there is a presence of moisture or water, no acid will work as an acid. मतलब हुआ कि एसिड जो है एसिड की तरह तभी काम करेगा जब वो पानी में घुला हुआ रहेगा या मॉइस्चर में घुला हुआ रहेगा. मतलब बिना पानी के एसिड एसिड के जैसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि एसिड जब पानी में घुलता है तभी वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है. दिस H प्लस आयन रिलीज करता है, दिस H प्लस आयन. ओके, तो जब ये H प्लस आयन रिलीज करेगा तभी ये एसिड के जैसा काम करेगा. और जब वो गैस स्टेट में है तो उसमें आयंस नहीं होता है, इसलिए गैसियस स्टेट में जब तक रहेगा एसिड तब तक वो एसिड के रूप में काम नहीं करेगा. लेकिन जैसे उसको हम मॉइस्चर में या पानी में डिजॉल्व हो जाता है उस समय ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और एसिड के जैसा काम करता है. तो हम एसिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन नाउ वी कैन से दैट acid is a compound that produces a compound that produces hydrogen ion or hydronium ion. This is known as hydronium ion. This is hydrogen ion. This symbol of hydrogen ion is the symbol of hydronium ion. When it dissolves in water, that means acid are those compounds which produces H plus ion or H3O plus ion when it is dissolved in water. Okay, so very simple definition. And apart from this, you must know that this H plus ion cannot exist alone. This H plus ion in water will not exist alone. What happens when acid dissolves into the water? Then acid undergoes dissociation. Right, when this HCl is dissolved in water, then it will dissociate and produces what it will produce? It will produce H plus and Cl minus. When you dissolve this HCl into water, then it will produce H plus and Cl minus. And this H plus will combine with water. And this H plus will combine with water and produces hydronium ion. So all acid contains H. So all acid will produce H plus ion, but this H plus ion will not remain independently. But this H plus ion will combine with water in which it is dissolved and get converted into hydronium ion. So hydrogen ion will not exist alone, but it will exist as a hydronium ion because H plus ion has got a capability to combine with water and get converted into hydronium ion. So H plus ion in water always exists as hydronium ion. So you won't get hydrogen ion in water when you practically try to look into it. So it H plus ion always exists as hydronium ion. Remember this. ठीक है, मतलब कि H plus ion कभी भी अकेले नहीं रहेगा, वो हमेशा
वाटर के साथ कंबाइन करके इस हाइड्रोनियम आयन के रूप में मिलेगा। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आता है? कोई भी एसिड ये सब ले लो, जब वो टूटेगा तो H प्लस आयन रिलीज करेगा, जैसे HCl फॉर्म करता है, ये HCl और Cl माइनस में टूटेगा। H2SO4 जो है वो टूटेगा 2H प्लस जो हाइड्रोजन है और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, SO4 2 माइनस। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज हुआ, ये हाइड्रोजन आयन वाटर से कंबाइन करके H2O बनाएगा। So the common characteristic of acid is what here? That it always produces H plus ion or H3O plus ion. That means which will decide the strength of the acid. So now we'll talk about the strength of the acid. Okay. So what happens? There is a separation or ionization. There is a separation of H plus ion takes place from acid. Okay. And the separation of H plus ion will not take place in the absence of water. So H plus ion will always combine with water to form this. Now the strength of acid will depend upon this concentration of H plus ion or H3O plus ion. That means strength of the acid. है ना, acid strong है, weak है, ये जो डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा? स्ट्रॉन्ग किसको बोल रहे हैं? जिसका एक्शन सीवियर होता है, एसिड विच हैज गॉट सीवियर एक्शन। वीक एसिड किसको बोलेंगे? जिसका एक्शन माइल्ड होता है। जैसे हम लोग खाते हैं, टमाटर खाते हैं, खट्टा होता है, उसका एक्शन माइल्ड है ना। इमली खाते हैं, है ना, वो उसका एक्शन माइल्ड है। सो दीज आर द वीक एसिड्स विच हैव द माइल्ड इफेक्ट एंड देयर आर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO3 which has got the severe action. If you put this acid on your body, your body will be melted down. Your body will get burned down. So that is the thing. So these are the strong acid and weak acid. So strength of the acid depends upon the concentration of H plus and H3O plus ion. Now what is the concentration? What is this concentration? What tells you? It is the concentration means number of H plus ion or H3O plus ion per liter of the solid. Now unit per unit volume. Per unit volume. Concentration of the hydrogen ion or H3O plus ion, hydronium ion per unit volume of the solid is known as concentration. 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन और H3O प्लस आयन कितना है? 1 लीटर या 1 ml, कोई भी यूनिट लेंगे, 1 ml लेंगे, 1 लीटर लेंगे, 1 किलो लीटर लेंगे, जिसमें तुमको मानना है उसमें कैलकुलेट, बट यू शुड टेक द यूनिट वॉल्यूम. सो इन यूनिट वॉल्यूम हाउ मच हाइड्रोजन एंड हाउ मच H3O प्लस आयन इज देयर. जितना ज़्यादा H प्लस आयन और H3O प्लस आयन होगा पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एसिड, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा उसका एक्शन सीवियर होगा. So if the concentration of H3O plus and H plus is more, then it will be a strong acid. And if the number of H plus and H3O plus ion is less per unit volume of the acid, then it will be a weaker acid. So who will decide the strength of the acid? That is the concentration of the hydrogen ion or hydronium ion. That will decide the strength of the acid. So when we are considering the strength of the acid, we always consider the concentration of hydrogen ion or hydronium ion. यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसका अमाउंट कितना यूनिट वॉल्यूम है, उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं. अगर कॉन्सेंट्रेशन इस दोनों का ज़्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम, तो एसिड को हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, और इसका अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसको वीक एसिड बोलते हैं. तो हमेशा स्ट्रेंथ देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो है कॉन्सेंट्रेशन देखना पड़ेगा H प्लस और H3O प्लस आयन. इनफैक्ट H3O प्लस ही मिलेगा, H प्लस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि H प्लस तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता नहीं है, तो हमेशा कंबाइन करके H3O प्लस बन ही जाता है. तो इसलिए हमेशा हमको क्या चीज़ पता करना है, हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन लिखते समय अगर हम H प्लस लिख दिए H3O प्लस के बदले तो कोई बात नहीं है, तो हमने H3O प्लस लिखो या H प्लस लिखो, बट
In your mind, you always keep it in mind that H plus ion never exists in water. Independently, it always exists as H3O plus ion. तो इस बात को ध्यान में रखना है. ओके, ये तो हम बता दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, वीक एसिड किसको बोलते हैं, जिसमें H प्लस आयन H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें कम होगा वीक. इन रियलिटी और भी कुछ होता है जो हमको जानना पड़ेगा. So now the strong acid is what? An acid which dissociates completely. Okay. So earlier I have given you the strength of the acid on the basis of the number of H plus ion. The more number of H plus ion or number of H3O plus ion is there or acid, then we call it as strong acid. If the less number of H plus ion, H3O plus ion is there, then we call it as a weak acid. Okay. But this is not a complete definition. It's not a complete definition. This is the one part of one of the characteristics of the acid when it is dissolved into water. The main thing is that what is a strong acid? A strong acid are those acids which gives you the ultimate dissociation, undergoes ultimate dissociation. It means that whatever hydrogen is present in an acid, that will get dissociated as a H plus ion. Then it is called a strong acid. Like HCl has got 1 H plus ion per molecule. Per molecule you have got 1 mole of H plus ion. So when you put into the water, it will give you the 1 H plus ion. When you put this H2SO4 into the water, it will give you the 2. There are 2 mole of hydrogen here. So it will give you the 2 mole of hydrogen ion. Here it 1 mole of nitric acid gives you the 1 mole of H plus ion. Because how many? 1 mole of H plus hydrogen is there and produces 1 mole of H plus ion. So strong acid. It has got 2 mole of hydrogen ion and produces 2 mole of hydrogen ion. That's why it is strong. It has got 1 mole of hydrogen and hydrogen is present in this molecule and gives you the 1 mole of hydrogen ion only. And that is why these are strong acids, because they are completely dissociated. That means whatever hydrogen present in this molecule will come out as a hydrogen ion. Okay, so complete entire hydrogen present in the molecule come out as a hydrogen ion when it is dissolved into the water, and later on this hydrogen ion combines with the water and forms a hydronium ion. So these are the strong acids. So an acid which dissociates completely or almost completely in water is called a strong acid. And this acid, when it is dissolved into the water, contains only ions, no molecules at all. That means when you dissolve HCl into the water, HCl will not be available into the water. When you dissolve this HCl into the water, it will exist as a H plus ion and Cl minus ion. It will exist as H plus ion and Cl minus ion, and this H plus ion will combine with water and forms a hydronium ion. When you dissolve this sulfuric acid into the water, it will exist as a 2H plus ion and 1 sulfate ion. Okay, and this 2H plus ion combines with the water and forms a hydronium ion. So, and when you dissolve this nitric acid into the water, it will produce H plus ion and NO3. It will produce this HNO3. It will produce H plus and NO3 minus. And these two ions it will produce. Which one? This HNO3 nitric acid will produce these two type of ions, and this H plus ion combines with the water and forms a hydronium ion. Now, so no HNO3 molecule, no H2SO4 molecule, no HCl molecule. So these molecules will not be available once it is dissolved into water, but it will exist as a ions form. So strong acids are those acids which contains only ions. So strong acids, another way we can say, strong acids are those acids which contains only ions. मतलब क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है जब उसको हम पानी में घुलाते हैं तो ये कम्प्लीटली टूट जाता है ना, टूट जाता है H प्लस आयन में, Cl माइनस में, H प्लस आयन में और सल्फेट आयन में, H प्लस आयन में और नाइट्रेट आयन में. तो कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा उस सॉल्यूशन में. HCl मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, H2SO4 मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, HNO3 मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका आयन सेट मिलेगा. इसलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयन ही रहता है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं रहता है. ओके,
और हाई क्वांटिटी ऑफ आयंस रहता है। हाई क्वांटिटी ऑफ आयंस मिलते कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ज़्यादा होता है, क्योंकि सिर्फ आयंस ही रहता है तो कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द वीक एसिड, जस्ट अपोजिट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट आई सेड हियर, द स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड्स व्हिच आर कंप्लीटली dissociated. Okay, completely dissociated. So we'll say that it is not completely dissociated. So weak acid are those acids which are partially dissociated, which dissociates only partially when dissolved into the water is called weak acid. So strong acid are those acids which dissociates completely into the water and produces only ions. Okay, so those type of strong acid. But when acid dissociates partially, not completely, that means dissociates incompletely, when it is dissolved into the water, then it is called weak acid. And this acid, since it is not dissociate completely, so it will contain ions as well as molecules. It will contain ion as well as molecules. Now you can see here. Now you see. I am wiping out. Might have noted down. Okay. Now you see here. When HCl dissociated, it produces H plus and Cl minus. When H2SO4 dissociates, it produces 2H plus and 1 sulfate ion. When HNO3 dissociates, it produces 1H plus ion and 1 NO3 minus. So no ions. These are the example of strong acids. These are strong acids. Dissociates completely. Now I'll take up the example of weak acid. First the CH3COOH. Now you can see how many hydrogens are there. How many hydrogens are there? 3, 1, 4. But it will give you only one H plus ion. CH3, COO minus and H plus. So it has got 4 hydrogen into it, but it produces only one H plus ion. So although it has got a more number of hydrogen into it, but produces very few number of hydrogen. Okay. Now second you take the example of formic acid. This is your formic acid, this is your acetic acid. Formic acid जो चीटी हमारे बॉडी में डालता है. Now you can take the example. It will get dissociated. How many hydrogen is there? There are 2 hydrogen, but it will produce only 1 hydrogen. Okay. Now take the example of H2CO3. It will not dissociate in one step. First it will dissociate H plus and HCO3 minus, and then this HCO3 minus dissociate into H plus and CO3. Okay. Now you see, this is carbonic acid. It is a mineral acid, but it is weak acid because it is not dissociated completely. Completely it dissociates. Apart from this, what you will see, some of the CH3COH dissociate into it, and most of the around 90% of the acetic acid, around 90 to 95% of acetic CH3COOH molecule remain as CH3COOH. Only 10% of the CH3COOH will dissociate like this. One thing is that जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसमें रहता है वो सबके सब हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट नहीं होता. पहला केस तो ये है वीक एसिड में, इसमें 4 हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल में लेकिन रिलीज एक ही करता है. इसमें 2 हाइड्रोजन है लेकिन रिलीज एक ही करता है. इसमें 2 है लेकिन रिलीज एक ही करता है. बाद में ये रिलीज करता है बहुत डिफिकल्टी से, जल्दी आयनाइजेशन होता नहीं है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाने के बाद उससे H प्लस निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो ये डिफिकल्ट होता है. इसलिए ये भी वीक एसिड है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालना. तो 2 चीज़ होता है वीक एसिड में. एक होता है कि ये डिसोसिएट जो होता है उसमें जितना रहता है हाइड्रोजन उतना का वो सारा हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट नहीं होता है. जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दिया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो एक ही दिया.
ओके, दूसरा चीज़ क्या होता है कि सिर्फ जो है 10% अराउंड 5 to 10% मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होता है, बाकी मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। जैसे C.S.Sir है, तो अगर 100 मॉलिक्यूल है तो उसमें 10 मॉलिक्यूल इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। अगर 100 मॉलिक्यूल है C.S.3COH का वाटर में, तो उसमें से 10 मॉलिक्यूल इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, बाकी 90 मॉलिक्यूल ऐसा ही रहेगा C.S.3COH। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूल भी है और आयंस भी है। तो वीक एसिड का पहचान क्या है, तो उसमें जो है आयंस भी होता है और मॉलिक्यूल्स भी होता है। जैसे ये एक केस में भी वही होगा कि बहुत 5 to 10% जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से डिसोसिएट कर जाएगा और बाकी मॉलिक्यूल ऐसे ही रह जाएगा। तो आयंस भी मिल जाएगा सॉल्यूशन में और मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन से वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स which contains ions as well as molecules, whereas strong acid are those type of acid which contains only ions. Okay, so these are the parameters on which we can say that they are strong acid and weak acid. So I think you might have understood. If you have any other confusion, you feel free to contact me. Okay, thank you very much for it. Have a nice day.